नमस्कार, स्वागत है PNBC की खास पेशकश, खास मुलाकात में। हम दिल की बात करते हैं, हम दिल को संभालते हैं, लेकिन जब इस दिल को कोई तकलीफ होती है तो हमें भी बड़ी तकलीफ होती है। आज जो शख्सियत हमारे PCN न्यूज में यहाँ पर हमारे साथ में खास मुलाकात में हमारे साथ में शामिल है, उनके बारे में खासियत ये कि दिल को बड़े दिल से और बहुत ही नजाकत से संभालते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस आज की खास मुलाकात में डॉक्टर रामास्वामी जी का, जो कि CEO एंड डायरेक्टर है हील द हार्ट सोसाइटी के, और इनकी स्पेशलिटी है कि ये नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं। सीनियर कंसल्टेंट है जो कि नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट करते हैं। साथ ही मेरे साथ में डॉक्टर प्रदीप पाटिल, जो कि डायरेक्टर है श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल के। आई वेलकम बोथ ऑफ यू इन दिस स्मॉल डिस्कशन। Before we start the journey, Dr. Ramasamy, I would like to ask you about your journey so far and what is the specialty. Now you are in India, you are basically from US, so many people you have treated, and I would like to share about Dr. Ramasamy that he has delivered so many lectures, more than 100 lectures in so many institutes. So we will have a small discussion with Dr. Ramasamy about his brief journey. Thank you. I started my medical career in Davangere in Karnataka. There I completed my MBBS, and then I came back to Chennai, that is where I am born, and there I did my residency in Stanley Government Medical College Hospital. Then I moved back to Pondicherry. For 1 year I was working as a resident. Then I got interested in cardiology, so I took an examination and then I went back to US. In US, I stayed and did a fellowship in clinical cardiology with Portchester University. There, while I doing my fellowship in cardiology, I came across a treatment in cardiac center, which is called enhanced external counterpulsation. So I was so lucky because it was the first commercial center to be started in US. And this is completely changes the view, how you treat cardiac patients. Initially, at that time, it's 2000, I think 99, 2000. Everybody thinks if you have a heart disease or a blockage in the blood vessel carrying blood to the heart muscle, you have three options. One is medication, and many times medication is not sufficient enough. So then they move on to the next stage, which is invasive procedures. These are called bypass surgery and angioplasty. They are highly risky and highly invasive procedure. Now, when I come across this EECP treatment, I was so fascinated. The reason is this treatment is absolutely non-invasive. It does not involve any cutting open your body or injecting any fluid inside your body. It is simply a mechanical procedure, helps to improve the blood flow to the heart muscle. I got so interested in it and I started working on this as a research fellow. And the manufacturer of this equipment, which is based in New York, recruited me and helped me to complete my residency, which is my fellowship, as well as start working on research in this EECP field. Now, and this has really created a change in my life, because as soon as I see this treatment and patients started improving, because the patient I saw are not able to go for a bypass or angioplasty, or they have gone for this highly invasive procedure, bypass and angioplasty, but still they have a lot of symptoms. So this is a long procedure of 35 days, this EECP. When we do the procedure, the patient improvement is so significant. So finally, I went and spoke to these people who manufacture the equipment. Okay. I was in Stony Brook University, so they did hear me. I told them, look, I need to take this procedure to India, and I want to initiate a program, and I will train the doctors and the therapists there to create a program of EECP. Here in India? India, yeah. Okay. So in 2002, I brought this technology. We created a society. We trained a lot of doctors. In fact, the first traction that the treatment became very appealing to many cardiologists initially. And we started our first center in Madhya Pradesh, actually, People's General Hospital. And then Fortis groups picked up the concept. And from there, my journey started almost like 15 to 18 years. I did more than 100, 200 presentation. And this concept has been picking up. So enhanced external counterpulsation is a non-invasive option for patient with coronary artery disease or blockage in the blood vessel carrying blood to the heart muscle. So my objective is to bring a treatment which should be alternative to bypass and angioplasty. Great.
And people who don't want to go for it, I think they have an alternative procedure which is equally as effective as bypass and angio. Rather, it is a boon for them. Yes, because in India you might see not everywhere you can able to avoid this highly invasive procedure, bypass and angioplasty. And the Indian tends to have a different coronary anatomy, in the sense their blood vessels are so thin because of the diabetes. They are not easily got treated with this bypass and angioplasty. There are comparatively worldwide, India is having more diabetic patients. Yes, I think that's why we used to call India is a diabetic capital of the world. One is we have a huge population, and second is the diabetes incidence is very high when compared with the Western countries. And when you have a high incident of this diabetes, naturally you tend to have a multiple blockage in your blood vessel, which make you difficult to go for these highly invasive procedures. Right now I will come to Dr. Pradeep Patil. अभी सर बता रहे थे कि इंडिया जो है वो मोर डायबिटिक पेशेंट है. आपके साथ में बातचीत के दौरान मुझे ये लगा कि आपका चेहरा भी बड़ा डायबिटिक है, मतलब शुगर से भरा हुआ है. काफी पेशेंट जो है आपके चेहरे को देख के ऐसे हील हो जाते होंगे. डॉक्टर साहब, श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, इसकी रचना, इसके पीछे का विजन और इसको आज इस मुकाम तक लाने की आपकी जर्नी भी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे. श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये हार्ट पेशेंट जिनको 70 to 100% हार्ट ब्लॉकेजेस है जी, उनको विदाउट ऑपरेशन ट्रीट करता है जी. इसके पीछे संकल्पना ऐसी है कि हम सुनते हैं कि पड़ोस में एक आदमी था, उसको हार्ट अटैक आया. कल तक क्या अच्छा था, बाद में एम्बुलेंस आई लेके गई, उसके बाद में हार्ट अटैक आ गया और उसके बाद में एक्सपायर हो गया. या फिर पता चलता हमारे को कि एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया. मेरा ये कहना है कि ब्लॉकेजेस सिंगल डे में नहीं डेवलप होते, इट टेक्स ए ड्यू कोर्स ऑफ टाइम टू डेवलप द ब्लॉकेजेस. मेरे घर में एक केस हुई थी जिसमें बड़े भैया को हार्ट अटैक आया था. दैट वाज इन 2004. ओके. सो एट दैट टाइम ऑल डॉक्टर्स मेक पैनिक, यानी डरा देते हैं कि एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा नहीं तो योर पेशेंट विल एक्सपायर. तब मेरे को एक ऐसा लगा कि हमारे पेशेंट्स के लिए बिना ऑपरेशन ट्रीटमेंट होना चाहिए. और उस वक्त में मेरे को EECP के बारे में पता चला और इसी से मेरे हॉस्पिटल की EECP का ट्रीटमेंट का चालू करने का वहां से नींव रखी गई कि हम वो EECP को हम अडॉप्ट करें. और इसमें मेरे पत्नी अर्चना पाटिल का बहुत बड़ा हाथ है जी. क्योंकि क्या नाम रखना, तो बोले हमारी जिंदगी में स्वामी समर्थ महाराज जी ही है जिन्होंने हमारा अभी तक के सब ये किया. और ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा फाइनेंस इन्वॉल्व है. सो ये हम लोग इसका नाम श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल रखेंगे और ये श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ने नाम रखा और इसकी शुरुआत होगी. डॉक्टर साहब, एक ट्रेडिशनल वे होता है, जैसा कि कहा कि पहले अगर कोई दिल का मरीज हो तो वैसे ही डरा हुआ होता है कि मेरे साथ में क्या होगा. उसके बाद में हम उसको कहते हैं कि एंजियोग्राफी कराओ, फिर एंजियोप्लास्टी कराओ, फिर बाईपास कराओ और उसके साथ में बहुत सारी मेडिकेशन, तो उसको और डर लगता है. तो ये ECP थेरेपी जो है आपकी, इसको कैसा रिकमेंडेशन मिला है, कैसे इसको प्रतिसाद आपको मिल रहा है? हमारी जो पेशेंट्स है जो EECP लेते हैं वो ट्रीटमेंट के दौरान मनपसंद गाना सुनते, रिलैक्स रहते और हमारे ऑरा में, यानी हॉस्पिटल के ऑरा में भगवान के मंत्र वगैरह चलते रहते जी. वो सुनते रहते, वो काफ़ी प्रसन्न रहते और एक प्रकार से उनका डर जो है वो निकल जाता है. सो दे आर वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश है कि हमारे को बिना काटे पीटे और बिना तकलीफ के ट्रीटमेंट हो रही. और एक स्पेशल एनवायरनमेंट होता है जिसके अंदर में उनका ट्रीटमेंट होता है, जिसमें पॉजिटिविटी रहती है. तो पॉजिटिविटी उनको पॉजिटिवनेस की तरफ, मतलब उनके जल्दी ठीक होने की संभावना है और बढ़ जाती है. Dr. Ramasamy, I would like to ask you one question. Are there any percentage of the blockages that can heal to that ECP therapy, or there is no any such kind of foundation for this? Okay, I mean, it's a very interesting question. I mean, you're asking what type of blocks that EECP could help. Well, I mean, see, when you look at the treatment for heart disease, people think the block has a major role to play on it. Correct. But if you look carefully, whether it is a bypass surgery or an angioplasty or a medication, their objective is to improve the blood flow beyond the blocked artery. So if you can able to improve the blood flow beyond the blocked artery, the patient becomes symptomless and they can able to do the regular activity and they're actually get away from the heart disease. So EECP can able to improve the blood flow irrespective of how bad the blockages are. It could be a single vessel
or it could be a blood vessel, two vessels can be blocked, or three vessels, or multiple blocks. In all this case, EECP is the safest treatment in cardiac treatment procedures. Another one I want to add here, people tend to think, because it's very emotionally they are disturbed. If I say like your patient, if I have a 90% block, then you are panicked. You immediately set a panic mode. Naturally, it's a natural reaction. But remember that many times we have seen it is not the 90% block is a culprit. The culprit could be a 20 or 30% block. Okay. 50% of the heart attack happens because of the blockage, which is less than 50%. So it's a psychological effect on the mind of the patient. It's about it's what really happens is the 50% blocks and 90% blocks. 90% blocks usually would have taken for years to develop. You don't develop a 90% block in a single day. Correct. It's going to take a long time. So slowly the blocks develops and become a 90%. When it is become slowly developing to 90%, it becomes what you call a stable. It will not break. But it is a small blockage. 30 to 40% will often break and causes a heart attack. Okay. So the patient should get out of their mind about that 90% block is too risky. I already have a 90% block. So your risk is also there if it is a 30% block. Okay, means there is I'm concerned about the whatever may be the percentage. This therapy can heal any kind of patient. Yes. Conclusion is that's a good takeaway point. So it's whether it is a 50, 60 or 90, whether it is a single vessel or double vessel or all three vessel obstructed, EECP could be an effective alternative to improve the blood flow beyond the blocked artery. Okay, so you have a greater chances to heal through this process. Yes. डॉक्टर साहब आजकल प्रदीप सर हमने देखा है कि हार्ट अटैक की अगर हम बात करें तो उसके लिए एज की कोई अभी सीमा नहीं रही। आज आप 25 साल में भी आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं और उसके बाद में ग्रेजुअली अगर बढ़े तो आपकी क्या स्टडी कहती है इसमें और इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसका अनियमित खान पान, रहन सहन, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल, bad habits like tobacco chewing, smoking, then alcohol, then fried foods, फास्ट फूड जो आजकल के यंग जनरेशन जो पिज्जा, बर्गर, चीज, बटर, समोसा, कचौरी, पकौड़े अति मात्रा में खाना, और आजकल लोगों को टेस्ट डेवलप हो गई, दे वांट ओनली फास्ट फूड, दैट इज जंक फूड which is creating this problems. लाइफ भी आजकल लोगों की काफी स्ट्रेसफुल हो गई, क्या इसका भी परिणाम? Yes, definitely. स्ट्रेस प्लेज यानी बड़ा रोल प्ले करता है हार्ट अटैक लाने में। तो हम लोगों ने स्ट्रेस का रीजन आइडेंटिफाई करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पेशेंट को उस स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर साहब आपसे बातचीत करते हुए आपने कहा कि इस ट्रीटमेंट को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है एंड रिसेंटली यू हैव एडेड अ फोर्थ मशीनरी इन योर team in your group also. So tell us about that in a brief, how you got the response of the people for this therapy. हमने शुरुआत की थी एक मशीन से 2012 में। नाउ टुडे इट इज अभी हम 2023 में। करेक्ट। पहली मशीन फुल हो गई पेशेंट से, मींस उसका कैपेसिटी 10 पेशेंट्स का है। 10 पेशेंट 10 पेशेंट्स खत्म हो गए यानी कंप्लीट हो गया, तो नीड आई कि सेकंड मशीन लिया जाए। सेकेंड मशीन लेने के बाद में 20 पेशेंट का टारगेट हमारा इजीली अचीव हो गया कुछ सालों में। अब आया कि थर्ड मशीन लाई है। थर्ड मशीन में भी वही पेशेंट्स अभी हमारे यहाँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि हमने चौथी मशीन के लिए जाना चाहिए और एक बिगेस्ट सेंटर अपना क्रिएट करना चाहिए। और सेकेंड थिंग, अभी हमारे पास आज ही एक बिलासपुर से पेशेंट आया। पेशेंट में बस यहाँ से मुंबई से आ रहे, देन पूना से आ रहे, छत्तीसगढ़ से आ रहे, MP से आ रहे और अपना दमोह और सागर जैसे गांव से आ रहे हैं। एक प्रकार से अपना नागपुर अभी उनके लिए मेडिकल हब बनते जा रहा। वो आके यहाँ पे रुकते हैं 40 दिन, ट्रीटमेंट करते हैं और अपने गांव जाते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रेफरेंस पेशेंट होंगे जो पहले यहाँ से ठीक होकर वहां गए हैं और उन्होंने रिकमेंड किया है कि हाँ यार ये सब कुछ ठीक है, तो आप यहाँ जा सकते हो और आप ये थेरेपी करो तो उसमें आपका बेहतर इलाज हो सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। सही बात है। डॉक्टर रामास्वामी, आई वुड लाइक टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन. Is there any recurrency in that treatment once you declare that now patient you are okay? Some person like me, if I came to you and I treated with this treatment, so should I be relaxed now probably till the life? I won't get any kind of trouble in future comparatively to the bypass surgery or angiography, what we say?
Okay. So there is no absolute treatment for heart disease as such. Right. For example, you ask me a question correctly. Sir, I did my EECP, I did my bypass, I did an angioplasty. Am I cured? Yeah. Well, I mean, bypass or angioplasty or EECP, all of them are not a curative treatment. They are all palliative treatments. So if I want to tell you correctly, for example, I have undergone a 35 days of EECP. So my blood flow has improved, doctor. I went through a lot of tests, everything become normal, and I'm doing my regular activity. Do I need to repeat this procedure again? Well, what we did is we improved the blood flow across the blocked artery, whether it is EECP or bypass or angioplasty. But what actually is your disease is forming the blockage. Okay. So forming the blockage is called heart disease. So in your family, all of them are eating the same food, they're doing the same routine activity what you're doing. But unfortunately, if you are getting a blockage, means you have a tendency to form the blockages and you have a higher tendency. So this is your heart is telling you that your lifestyle is not acceptable to your heart. So basically, if you're able to change your lifestyle, control your risk factor, reduce your weight, stop smoking, and do regular activity, then the recurrence of the same problem will not happen. So it is not the procedure, it is changing your lifestyle and sticking to the medication which is given to you. This will prevent a recurrent redo procedures again. बाईपास में डॉक्टर साहब और एंजियोग्राफी में बहुत सारी मतलब मेडिसिन भी होती हैं, तो ये ईसीपी के साथ में भी क्या मेडिकेशन का एक कोर्स होता है, उसके बारे में थोड़ा सा। मेडिसिन हार्ट पेशेंट को लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है जी। उसमें एक खून पतला करने वाली दवाई रहती है, एक कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई रहती है। लेकिन सर्जिकल इंटरवेंशन में जैसे बहुत सारी मेडिसिन दी जाती है, हमारे ट्रीटमेंट के बाद में वो मेडिसिन का जो है ना कम होती जाती है, बट तुरंत कम नहीं होती, आफ्टर 6 मंथ्स वो कम होती है। मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद में आपको ये मेडिकेशंस कंपैरेटिवली जो नॉर्मल अपनी जो थेरेपी है उसके कंपैरिजन में आपको कम लेनी पड़ती है। ये ट्रीटमेंट में लेडीज जेंट्स का कोई मापदंड होता है? नहीं, दोनों के लिए सेम थेरेपी, सेम ड्यूरेशन है। इस आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपके कुछ अनुभव रहे हो कि जहां आपको पेशेंट्स के साथ में लगा कि हाँ यार अब बड़ी बड़ी क्रिटिकल पोजीशन आ गई है, लेकिन उसमें भी वो ट्रीट होके आज अच्छी जिंदगी जी रहे हैं? बहुत सारे अनुभव है मेरे। रिसेंटली एक दमोह से पेशेंट आई थी जी, वो यहाँ से 2 कदम नहीं चल सकती थी जी। उसको पकड़ के मशीन पे बिठाया जाता था और 2 बार वो क्रिटिकल भी हुई, बट धीरे धीरे उसको हम लोगों ने मेडिसिन से मैनेज किया और सब ट्रीटमेंट दिया। और जिस दिन आई थी तो उसको 2 जन पकड़ के बेड पे सुलाते थे जी, हमारी ईसीपी के जी। उसके बाद में मेरे पास एक वीडियो है जिसमें वो लड़के को पीछे छोड़ रही। अच्छा। एंड वो दूसरे मंजिले पे रहते थे, लड़का पीछे और माँ ऊपर चढ़ रही। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो। बिल्कुल, we will love to share that video with our viewers also. Yes, sir. Dr. Ramasamy, you have treated a patient worldwide, right? So, what is the difference you observed within India and outside the India about patients, with their responses? See, I think when we consider EECP, the treatment benefit of EECP depend upon your blood flow in your legs. Okay. Because what we do during EECP is we put 3 sets of cuffs in your leg and compress and reverse the blood flow towards your upper part of the body. So once the blood flow is reversed and it comes to the heart, if there is a blocked artery, what it will do is the increased blood flow will create a kind of a hypertension in your heart. So this will create new vessel or open the collaterals. We call it as angiogenesis, new vessel formation around the blocked artery. Once it has happened, the blood flow to the heart can be normalized as if you have gone for a bypass or angioplasty. Now, the treatment effectiveness differs. I would say the Indians, they responded to the treatment better than what we have seen in US. The reason is, even though we keep saying that heart disease is a problem with your lifestyle, sedentary lifestyle major, okay, but in spite of that, in India, we do walk. I mean, if you want to go for a mall, you have to walk, and most of the places we don't have elevators, so we have to take a step. So basically, Indians, they do more walking when compared to their counterpart in US and other European countries. So when you don't do the exercise properly or you become a sedentary, your vessels in the legs are not as big as it is supposed to be.
So Indians, because of their walking, they have a better vasculature. This is very applicable to people coming from the village area. So they respond to this EECP much better. So I would positively put a conclusion. Indian response to EECP is much better than what is being responded in Europe or any other countries. Okay, great. डॉक्टर प्रदीप सर, ये ब्लॉकेज को मॉनिटर करने के लिए EECP के लिए एंजियोग्राफी करना जरूरी होता है? एंड दो टाइप से हम लोग पता कर सकते हैं कैसे करते हैं कि ब्लॉकेज ये मैं जानना, एक एंजियोग्राफी मेथड है, हाँ, जो इन्वेजिव है जी, एक नॉन इन्वेजिव मेथड है सिटी एंजियो। ओके, सिटी एंजियो में कोई तकलीफ नहीं होती, पेशेंट गोज बाय वॉकिंग एंड कम्स आउट, यानी पैदल चल के जाता है, बाहर आता है, उसको सिर्फ मशीन पे लेटना होता है, ऊपर से मशीन आती है, वो स्कैन करती है, विद इन 2 मिनट्स इट टेल्स कि कितना ब्लॉकेज कौन सी आर्टरी में है। सो दैट इज बेटर टू डिटेक्ट ब्लॉकेजेस। यहाँ पे एडमिट करके यहाँ कट मार के ये सब डाई डालने का, उससे तो अच्छा ये मेथड है। मतलब नॉन इन्वेजिव मींस नॉन इन्वेजिव इन EECP देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट इन इन्वेजिव और नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज टू बी ऑपरेटेड फॉर योर बॉडी। या वेरी गुड। चलते चलते डॉक्टर प्रदीप सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और हमारी यंग जनरेशन जो नेक्स्ट जेन की मैं बात करता हूँ, वो हार्ट डिसीज से सुरक्षित रहे, या अगर हार्ट डिसीज हो तो वो इसी EECP की तरफ मुड़े, ऐसे आप क्या इनको एडवाइस देना चाहेंगे? मेन थिंग, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। हम लोग हमारी हैबिट्स में से टबैको रिमूव कर दे, स्मोकिंग रिमूव कर दे, जंक फूड खाना बंद कर दे, और डेली 35 मिनट्स वॉक करें। इसके अलावा स्लीप शुड बी कम से कम 6 से 8 घंटा, एंड टेंशन फ्री लाइफ जिए। I just asked Dr. Pradeep what message he could like to deliver to the young generation, and he very finely described that the people of young generation should avoid the bad habits like consuming tobacco and alcohol. So what is your take-home message to our viewers, especially to Indians, about safeguard themselves from the heart disease? See, heart disease is basically a lifestyle disease. So if you have a bad lifestyle, you will tend to get a heart disease at the earlier age or as soon as possible. And second important thing is genetic factors. So if your father and mother have a heart disease, you have a tendency to form this blockage, and you might become a heart disease sooner or later. So instead of having a lot of points, to make it very simplified, what I would say is, until 45 years, you make your activities very aggressive. So you become so you don't have to work on your diet, but you have to work on your exercise time. So have a maximum exercise time as possible. Don't make yourself sedentary. Don't gain weight. Simple. Well, after 50 years, now it is not sufficient to do your regular activity alone. Along with the exercise, control your food habit. Reduce your smoking. All other risk factors would have already come. Like if you are diabetic, try to reduce your diabetic, hypertension, reduce your blood pressure, cholesterol, reduce your cholesterol, and stop all your bad activities. So this should start after 50 years. If you try to do this, then your chances of getting heart disease significantly lower. So I would like to thank both the dignitaries. Very precisely you described about the disease, about the EECP. और मैं हमारे व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा, ये दिल की बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, अपने दिल को संभाल के रखना बहुत ही जरूरी, क्योंकि इन दिल में हमारा परिवार बसता है, हमारे अपने बसते हैं। और अगर कभी आपको भी अगर ऐसा लगे कि हमारे दिल में कुछ खराबी है या इससे रिलेटेड कुछ जानकारी आपको चाहिए, तो नॉन इन्वेजिव थेरेपी, जिसमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको लगाया नहीं जाता, कोई ऑपरेशन नहीं किया जाता, ऐसी थेरेपी श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल में आपके लिए उपलब्ध कराई गई है। मैं डॉक्टर प्रदीप पाटिल का और Dr.S. Ramasamy का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत थैंक यू, सो मेनी थैंक्स टू यू सर फॉर कमिंग हियर and sharing your views too with our customers. Thank you so much. Thank you. No hospitalization, no pain, no surgery, and highly cost effective.